Dr. Pawan Kumar Mishra sir, he is a PhD at Mendel University, Brno, the Czech Republic. He has 72 publications, 51,134 reads, and 2,858 citations. Oh, that's a long one. Professor sir is teaching at bioeconomics. Sir has covered his subject in many nations extensively. He specializes in biomedical scaffolds, wastewater management, and biocomposites. We have an MOU signed, we have a memorandum of understanding signed with sir and his college. ठीक है ना वही दिखाई दो क्यों For us academicians, there was a time when English was a very big skill, right? And our academicians used to or tried to speak in English, and Hindi was the fallback language. That was that era. जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तभी स्किल सेट होता था कि साइंटिस्ट हो अंग्रेजी बोल दो तभी अच्छे साइंटिस्ट। फिर एक एरा आज का है, आपको विटनेस कर रहे हैं। देखिए हिल रहा है, सर आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं। देखिए ये आ जाएगा। बैठे को पकड़ा तो बैठे थोड़ी है, क्या कर रही है बैठे बैठे। कोई फ्रेज नहीं मेरी हिंदी में, कोई इंग्लिश का फ्रेज लगाया, बट एवरीबॉडी वांटेड टू टॉक टू यू लाइक सब आपसे हिंदी में ही बात करना चाहते हैं। एक ऐसा एरा आएगा जब आप जो नई जनरेशन है एसर्टिव वो हिंदी में पूरा में देगी और इंग्लिश को कहेगी आई कैन बट आई डोंट, क्योंकि हम तो सब हिंदी स्पीकिंग क्लाइंटल है ना यहाँ। क्या जरूरत है? तो जरूरत है देखो। और अगर मैंने साइंस की है और मैंने मशीन बनाई है तो मशीन तो मेरी लैंग्वेज नहीं बोलती ना, वो तो काम करती है। साहब ने चिप बनाई है ना, वो काम करती है तो करती है नो मैटर बट लैंग्वेज स्पीक्स, यही है ना। और ये बहुत जरूरी है कि आप एसर्टिव रहें। और ये जो कॉलोनियल माइंडसेट वाला एक कॉम्प्लेक्स है ना हमारे दिमाग में, जो बहुत पुराना है, गोरा है तो स्मार्ट होगा। मैं आपको बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ कि आई बिन साउथ एशिया कोऑर्डिनेटर फॉर द यूनिवर्सिटी फॉर 5 years। तो हमारे साथ क्लर्क्स भी होंगे, सपोर्ट स्टाफ भी होगा और प्रोफेसर्स भी होंगे, और सब एकेडमिशियंस नहीं है ना। तो हमारे एक मित्र हैं, वो एक सपोर्ट स्टाफ है लेकिन मेरी जॉब लगा बिकॉज शी वाज वाइट। अब आप बताओ कि आप जो भी करते हैं जैसे भी करते हैं, हर आदमी की कैपेसिटी होती है एंड स्किल कलर इज नॉट द कैपेसिटी, इंग्लिश इज नॉट द कैपेसिटी, है ना। साइंस है, सॉलिड साइंस है, जो मशीन है, जो काम कर रहा है वो कर रहा है। ओके गुड, फाइनली टॉक टाइम फॉरवर्ड एंड सो सब पीपीटी नहीं है क्या? पीपीटी पीडीएफ है क्या? मुझे लगा So, this is slide presentation.
का दिन बहुत एक्सट्रीम में मूव करता रहा। एक प्रोफेसर आए, उन्होंने कहा कि बहुत गड़बड़ है, पानी सही नहीं है, हवा सही नहीं है ना। मैं कहूँगा आपसे थोड़ा सा व्यू पढ़ा करूँ। हमने 2 वर्ल्ड वॉर तो नहीं किए ना यार, 2 वर्ल्ड वॉर किए यूरोप में, किए ना, 2 वर्ल्ड वॉर भी किए, फिर यूरोपियन यूनियन बनाया, और जो हमारे यंग कलीग नहीं जानते, अमेरिका कुछ नहीं, कोरोना जाएगा है ना। आपको शायद पता होगा ये बात कि वाइट्स तो अमेरिका में थे ही नहीं, यूएस के नेटिव अमेरिकन तो ब्राउन हैं। तो हमारी हालत कितनी भी बुरी हो, पर हमने वर्ल्ड वॉर नहीं किए हैं, कोई जीनोसाइड नहीं किए हैं, ठीक है। और कोविड में भी सबको यही लग रहा था कि इंडिया खत्म, आधा इंडिया मर जाएगा, ये लग रहा था ना। जब हम न्यूज़ सुनते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, अपन बचेंगे ही नहीं, है ना, वैक्सीन नहीं है, पैसा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सब सही बैठे हैं, है ना, सब सही बैठे हैं। ऐसा तो कोई जेनोसाइड नहीं हुआ, ऐसे तो हम मिलियंस में नहीं मरे ना। तो वी विल फाइंड अ वे आउट ऑफ, हमारे पास क्या है ना। और हमारा जो, मेरी समझ में, ये इसमें बहुत सारा ओपिनियन है, मेरी समझ में हमारे पास बहुत कुछ है भी। डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास यंग पॉपुलेशन है जो सीखना चाहती है, जो करना चाहती है। अगर हम जाके गोरों के लिए टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, उनकी सेवा से अपनी भी कर सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, आपके पास 3 चीजें हैं। इवन इफ इट इज पॉल्यूशन, इवन इफ इट इज वेस्ट, आपके पास कुछ है स्टार्ट करने के लिए। और मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बड़े रिवॉल्यूशंस ऐसे ही होते हैं, जो आज का टॉपिक है। ये रशिया यूक्रेन वॉर से हुआ, आपको पता भी नहीं चला। यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ा पुश दिया बायो इकोनॉमी पढ़ाने के लिए, बायो इकोनॉमी डेवलप करने के लिए। हम यूनिवर्सिटीज को स्पेशल प्रोजेक्ट्स मिले, पैसे मिले कि आप बायो इकोनॉमी पढ़ाओ। वो क्यों? क्योंकि ऑयल की और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस रशिया पे थी, और जियो पॉलिटिक्स जितना यूरोप सफर किया, विंटर्स आई, एक्सट्रीम विंटर्स आई, तो दे थॉट कि इसका सॉल्यूशन निकालो। और अगर आज हम सब लोग सोचें कि हमारे पास माना कुछ नहीं है, तो जो है उसको सही कर लेना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सारा कंजम्पशन है, बहुत सारा फूड खाएंगे, बहुत सारा वेस्ट होगा, ठीक है। Why to take that waste as waste? That would be a starting for a product. पर हमारी टेक्नोलॉजी वो हमारे लिए हो, ठीक है। अभी आई विल प्रेजेंट यू कि बाकी दुनिया कैसे करती है। जब आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं और उसे कहते हैं कि हमें पैटेंट फाइल करना है, लॉयर के लिए $50,000 देना, तो वो कहते हैं आप ये बताओ ये टेक्नोलॉजी हमारे लोकल अप्लाई होगी? आप हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगा रहे हैं, आप हमारे यहाँ इसको अप्लाई करेंगे? और जब आप कहते हैं हाँ, तो कहते हैं ठीक है, हमारा टैक्स पेयर का पैसा ले लो। तो आपको अपनी टेक्नोलॉजीज बनानी होगी, और आपको एक और दौड़ है, रिसर्च पेपर छापेंगे, 50 छाप देंगे, 1000 छाप देंगे। आपको कुछ ऐसा करना हो जो काम करे, समथिंग दैट वर्क्स। और मुझे अक्रॉस द ग्लोब जितना मैंने सुना है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन आर्ग्यूमेंट यही होता है, इट वर्क्स। Yeah, and I'll just not digress too much and come back. Almost 4 years ago, European Union started an incentive to bioeconomy, and they started to hire professors who could handle that. And most of the places, Indians joined to play. And I try to explain कि जो interdisciplinarity practice में आती है तो कैसे होता है। अभी एक कलीग ने कहा collaborate, एक कलीग ने कहा कि complexity जो solutions में पढ़ते हैं, तो that is good. So I will go to that. Okay, before I go, ये जो brands आपकी सुने हैं, कौन जानते हैं इनके बारे में? बाटा कहाँ से आई? बाटा शूज तो सबने पहने, हमारा तो कदर का ब्रांड है। बाटा कहाँ का है? स्कोडा का you must have seen it. जावा मोटरसाइकिल तो बहुत आगे, जावा इंडिया में वापस आगे। अवस्थ एंटीवायरस, Skoda is from Czechoslovakia. check it. And Tatra truck, Indian Army is using since forever. Tatra is from Sweden or Netherlands? No, it is Czech products. Czech. Check product. Pilsner alcohol check product, and there is a long list of it. अब आप ये बताएं, ये कितने लोग कर रहे हैं? 10.5 million people, ठीक है, जिनका लैंड एरिया 78,871 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। और यूपी का साइज बताएं आपको, यूपी में हम 200
ऑलमोस्ट थ्राइस द साइज ऑफ होल चेकिया। एक छोटा सा कंट्री आपको टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है ना। और ये वो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड वॉर में इनका कोई से नहीं था। कभी जर्मन आए कब्जा करके, कभी इधर से रशियंस आए कब्जा करके, बिकॉज दे वर नॉट बिग इनफ, दे आर नॉट पोलैंड, दे वर नॉट जर्मनी, तो कभी इनका मिलिट्री माइंड बहुत बड़ा नहीं रहा, बट हैवी इंडस्ट्री के ये हब रहे। And now I'm introducing you to Czech Republic, the Czechia I come from. I work at, I come from India, but I work at Czechia. Czechia का geographical location एक तरफ ऑस्ट्रिया, एक तरफ जर्मनी, पोलैंड, and एक स्लोवाकिया, जो हमारा इंडिया पाकिस्तान है, उनका भी बहुत पीसफुल उनका पार्टीशन। अब this is the potential we should look at कि अगर 10.5 million people इतना सब कर सकते हैं तो there is nothing that cannot be given। आप ये ना सोचिए यूएस है, बहुत पैसा है ना, यूके है, जर्मनी है, नहीं, this is average country, है ना, this is average country। Sorry, okay, now I introduce the university that I come from। 1919 में यूनिवर्सिटी हमारी was founded। 5 फैकल्टी हैं, 8,900 स्टूडेंट है। इंडियन स्केल में बहुत छोटा लगता है, पर हमारी टोटल पॉपुलेशन देख करके आपको लगेगा स्केल है। और मोस्टली लोकल स्टूडेंट जो होता है वो चेक लैंग्वेज में पढ़ता है, फ्री में पढ़ता है, इवन उसको अकोमोडेशन की स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट से आती है, तो उसको सब फ्री में मिलता है, हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है। बट पॉइंट इज हमारे 8,900 में से 20% इंटरनेशनल स्टूडेंट, 1500 स्टाफ है, और यूनिवर्सिटी के पास 10,205 हेक्टेयर का करीब एक अपना फॉरेस्ट एंटरप्राइज है। तो जंगल यूनिवर्सिटी का ओन है, उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट चलते हैं जो क्लाइमेट चेंज पे चलते हैं, जो बायो प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, एंड दैट्स अ सेपरेट सोर्स फॉर द यूनिवर्सिटी, वे फुल फ्लैश्ड कंपनी की तरह चलते हैं। और बर्नो जो है वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट स्टूडेंट सिटीज में से एक है। एट अ टाइम इसमें 60,000 स्टूडेंट होता है, और ये 60,000 हो सकता है ज़्यादा ना हो, पर देखें पूरी पॉपुलेशन 3.5 लाख है, तो यू विल फील कि 3.5 लाख में से 60,000 स्टूडेंट है। एंड व्हाट आई एम मिसिंग हियर इज बाकी लोगों की शहर में इन्फोसिस है, रेड हैट है, अगस्त है, IBM है, AT&T है, यू नेम एन IT कंपनी दैट इज देयर, दैट मेक्स अस कैलिफोर्निया ऑफ सेंट्रल। इट मीन्स इफ यू हैव अ डिग्री इन IT यू विल गेट अ जॉब इन अ मंथ। ठीक है, जो यूरोप का एक बड़ा दिमाग में हमारे इमेज होता है कि यूरोप जाएंगे, लैंग्वेज बैरियर होगा, जॉब ही नहीं है, कैसे होगा, तो दैट इज नॉट द केस विद अस। एंड आई डोंट वांट यू टू गो विद माय वर्ड्स, ये तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। गूगल करें एंड जॉब्स इन बर्नो सर्च करें, लुक एट योर IT प्रोफाइल, इफ यू हैव अ जॉब ऑनलाइन दैट विल बी ऑफलाइन, बस वहाँ पे ऑफलाइन जॉब जैसा कुछ होता नहीं। आई थिंक दिस मच आई ओड टू माय यूनिवर्सिटी। And now I will come to my team. Okay, this is team bioeconomy and interdisciplinarity. You will see it has 4 parts, and you will be surprised to see they have managed. It's unfortunate that my presentation is not here, and somehow somebody can help me to full screen. Please, Aki. And this is the team bioeconomy. I come from core technologies, bio-nanomaterials, and I am heading this team bioeconomy along with the social scientist, along with the law scientist, also with the economist. And I'll show you what kind of papers we publish, what kind of activity we do, and I'm leading this one.
with social with lawyers, you must have heard of techno-economical analysis. I'm sure many of my colleagues have heard. But we started to do techno-legal analysis. For example, you will see. Sorry, आप देखते हो कि ना पेपर पे पेपर आए जा रहे हैं, इसका ये बना दिया, इससे ये बना दिया, इससे रॉकेट बना दिया, पर एट द एंड ऑफ डे क्या वो प्रोडक्ट मार्केट आएगा? आपने तो वेस्ट कर दिया रिसोर्स बना करके लैब में सब कर दिया, वो तो प्रोडक्ट मार्केट ही आएगा, वो तो रेगुलेटरी बॉडी पास नहीं करेगी। तो एक बहुत फैंसी मटेरियल होता है सेलुलोज, नैनो सेलुलोज। हमने उसमें करीब 5,000-6,000 रिसर्च पेपर है बायोमेडिकल एप्लीकेशंस का, इससे हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमने एक असेसमेंट किया लॉयर्स के साथ कि अगर हम यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन को एक नैनो सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट कहें जिसको अप्रूव कर दें, तो क्या वो करेंगे? आंसर वाज बिग नो, नेवर। तो 5,000 रिसर्च ठीक है, ये पहला। And this papers okay. Yes, and this paper was published in somewhere impact factor of 4.6, 4.7, and it was very well received. But we managed to do what we did. And then there's one more waste material, something, because I was just mentioning waste. यूरोप में पेपर बहुत यूज होता है, पेपर मिल्स भी बहुत सारे हैं, एंड बाई प्रोडक्ट ऑफ पेपर मिल है लिग्निन, वो वेस्ट है। मुझे आज भी ध्यान है, विजिटेड अ पेपर मिल और मैंने कहा जी हमको सैंपल दे दो लिग्निन का, हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। तो मैंने कहा यार आप नैनो पार्टिकल बनाओगे और मेरा कंटेंट है 10,000 टन, या तो आप कुछ ऐसा बनाओ कि मेरा 10,000 टन यूज कर लो, नहीं तो फिर हम वी आर हैप्पी बर्निंग इट। So the industry is happy burning a component but not ready to give you for research. Then we started one more research and we said, okay, let's see what kind of products are there. And again we went back to the literature and we found all kind of fancy stuffs are there, including ours. We were the first one to report the capsules, nano capsules of it. But then we noticed, खेल ही दूसरा है। हम बना रहे हैं फैंसी आइटम, ये अल्ट्रा यूज हो जाएगा, एंड इंडस्ट्री क्या बना रही है? पिग फीड, दे आर हैप्पी फीडिंग द पिग्स। इंडस्ट्री क्या बना रही है? अर्थवेयर। जो गैप है वो इस वजह से है कि जब साइंटिस्ट जाता है लैब में तो वो ये सोचता है कि यार सबसे बड़ा पेपर निकालूंगा 18 इम्पैक्ट का, उसके लिए क्या चाहिए? फैंसी इक्विपमेंट। आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी देखा होता है कि एक बहुत महंगा सा 5-7 करोड़ का फैंसी इक्विपमेंट लेकर के आओ जो किसी के पास नहीं है, उससे आप कुछ भी मेजर करो वो पब्लिश हो जाएगा क्योंकि किसी के पास इक्विपमेंट नहीं है। ऐसा मैंने पहली बार तब देखा, उन दिनों में ETH ज़ूरिक में काम करता था और स्विस टीम्स आर नोन टू बी वेरी रिच। उन्होंने हमसे बताया कि इस कंपनी ने जो पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रमन के साथ मिला के बनाया था, उनका प्रोटोटाइप भी पूरा होता, उससे पहले हमने खरीद के रख दिया। तो अब वो इक्विपमेंट सिर्फ उनके पास है, ठीक है? तो कोई भी जर्नल का एडिटर ही इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दैट मैन्युस्क्रिप्ट क्योंकि किसी के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है ना, किसी के पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है, बड़े वुड वांट टू डू। तो एक तो वो, और ये हम स्ट्रगल करते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा। मेरी PhD स्टूडेंट थी जामिया हमदर्द, इंडिया की रैंक 1 फार्मा यूनिवर्सिटी है वैसे तो, उसको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अपॉइंटमेंट में दिल्ली में एम्स में 30 से 40 दिन लग जाते थे। 40 दिन बाद उसका रिजल्ट आता था। हम पहले अपॉइंटमेंट के लिए डालते थे और जब मैं स्विस फेडरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में था 30 मिनट में आपका अपॉइंटमेंट है, ठीक है? आप कितना भी इनोवेशन करते रहते हैं, आप पीछे हैं, बट हाउ डू वी कॉम्पनसेट फॉर इट? माई आंसर इज इनोवेशन इज द की। Innovation is the key, and I think we proved it in my next slide. Okay. A week ago, we won this patent, and this patent is valid for till 2047. 2047 तक ये patent valid है। इसका स्पॉन्सर हमारा जो हमको जो लेटर दिया, मैंने आपसे बताया कि जब भी कोई आप पेटेंट के लिए यूनिवर्सिटी से पैसा मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी लोकल एप्लीकेशन बताओ। जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है और ये टैक्स में हुआ था, तो दूसरा ऑयल वाला एरिया है, हम खरीदे, हमने दिया और ये हो गया।
एंड यू नो अगर मैं इसे दिल्ली में बनाऊँ तो ये 3 रुपये लीटर में बन जाएगा। पर ये टेक्नोलॉजी जब बिकेगी तो एटलीस्ट $5 to $6 million का है। अगर किसी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर ने $50,000 ऑफ कोर्स दे देने का, क्योंकि $50,000 तो की एक कॉस्ट है। फिर उन्होंने प्रोफेसर तैयार किया, उनके लैब में काम होगा, तो सारा रिकवर करेंगे। एंड जस्ट इमेजिन नेक्स्ट वीक हम लोग कैश हाउस में ले जा रहे हैं इसी प्रोडक्ट के लिए, somehow they can use it। तो इनोवेशन तो होता है, एंड देयर इज नो फैंसी इक्विपमेंट इन इट, देयर इज नथिंग दैट यू नीड। इन फैक्ट हमें क्लीन वाटर के नीचे ग्रे वाटर से काम करना है। तो इनोवेशन का जो सॉफ्ट स्पॉट होता है ना, वो आप विदाउट फैंसी इक्विपमेंट भी कर सकते हैं। This is the first bio product that we have launched. And now coming back to the education. This is the team activity, our team's activity. I'm a member of this association of life science universities in Europe. I'm executive committee member along with the colleagues from Germany, Finland, and Netherlands, and of course Hannes there. What does this do? This is for the promotion of bioeconomy education, and this is what I was saying, a multidisciplinary field can only originate when people from different backgrounds can come together. I mean, I know we have seen some lectures from electronics people, and then the modelers came in, some biologists came in, and some of us were trying really hard to understand what they were saying, and some of us catch that, and some of us could not. That is different story. Okay. तो ये एक हमारी टीम एक्टिविटी है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। जैसे डेवलपिंग द न्यू करिकुला इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि बायो इकोनॉमी बना पढ़ा तो देंगे, फ्यूचर क्या है, क्या इंडस्ट्रीज को हायर करने के लिए तैयार है। बंद हो तो मोबाइल सीरियसली लिया जाता है। तो take friends to the colleagues who are doing it in their own country. भाई आप अपने यहाँ कर रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स आ है। मुझे ध्यान है टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख में भी ये सब्जेक्ट था, वहाँ के प्रोफेसर ने प्रेजेंट किया तो क्या स्टूडेंट नहीं आया, क्योंकि जर्मनी में ऐसा होता है कि आप आधा टाइम को इंडस्ट्री में प्लेस करना होता है, आधा टाइम को पढ़ता है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ही गेट्स हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री। अब स्टूडेंट को प्लेस करने की जिम्मेदारी प्रोफेसर की है, जो कैंडी प्रोफेसर है। इंडस्ट्री प्रोग्राम कैसे रन होगा। On the other hand, नेदरलैंड में मिली उनको इंडस्ट्री, नेदरलैंड वालों ने कहा हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है। फिनलैंड का तो बहुत बड़ा फॉरेस्ट बेस्ड एंटरप्राइज है, तो फिनलैंड वालों का भी प्रोग्राम चल रहा है। एंड फिनिश पीपल कंबाइन बायो इकोनॉमी विद इंफॉर्मेटिक्स। तो आपको वहाँ पे एक नया टर्म दिखेगा, दैट माइट सरप्राइज यू, दे आर टीचिंग बायो इकोनॉमी इंजीनियरिंग। मोना शी इज द डीन ऑफ हामिक यूनिवर्सिटी इन फिनलैंड, एंड उनका प्रोग्राम बायो इकोनॉमी को आईटी से कंबाइन करके चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। Sunday continue the collaboration. I will invite you to show you how they are developing this curricula and how regulatory authorities are behaving, because they are do the same way. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है हमारा भी जैसा। आप पर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और यूनिवर्सिटी आपको पर स्टूडेंट पढ़ाई में फीस देती है। तो हमारे यहाँ फिक्स सैलरीज नहीं होती, जैसे हम इंडिया में होते हैं कि एक बार आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए तो गवर्नमेंट पे ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है और गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है। देयर आर ब्लैक एंड वाइट रूल्स। आप इतना स्टूडेंट पढ़ाएंगे पर स्टूडेंट आपको इतनी ट्यूशन फी गवर्नमेंट से मिल जाएगी। अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे वो किस कैटेगरी का है उसके हिसाब से आपको फंडिंग मिलेगी, एंड देन दैट फंडिंग परकोलेट्स टू डिपार्टमेंट्स एंड फैकल्टीज उसके हिसाब से, एंड एवरीबॉडी इज ऑटोनोमस। But there is a catch here that we need to learn. Let's say मैं एक head of department हूँ and I hire all my fields. Somebody will have to perform. नहीं तो 6 महीने बाद फंडिंग नहीं आएगी, डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, काम करना। तो जब तक आप रिटायर नहीं है तब तक आपको काम करना है। Nobody controls you. Academic independence पूरी है और your results should be alphanumeric. तो मुझे लगता है कि अगर हमें इंडिया में भी रेड टेप से बाहर आना है तो
which will have to come someday कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब छोड़ के सोचेंगे वही लोग आए पढ़ाने जो टीचिंग और रिसर्च एंजॉय करते हैं rather than for the job security. These are the things I'm trying to do with you. There's one more thing. I'm also hosting European Union level event. It's called Bioeconomy Change Festival on 15th of March. This event happens all across the European Union at 26 places, also in Brussels. We are the Brno satellite of it, official satellite of it. You can go to LinkedIn and see the same poster. Along with this, we are also hosting a bio-based student innovation challenge, Europe. We are national coordinators for this. This is also my project, and we nominate Czech teams to Brussels. And you know, I'm doing it for last 3 years, and every time the team I am sending is Indian. An Indian guy is sending an Indian team to represent Czech here in Brussels. Right. I think that's more or less everything. If you have any questions about possibilities, about higher studies for students, or projects for colleagues, anything that you have in your mind, just यही सब है कुछ भी लगता हो क्या समझते हैं साहब तो हिंदी है तो जुड़ा है ना nothing 10,000 किलोमीटर से आया सवाल ही नहीं Thank you very much. You've been an excellent audience. Thank you, sir. That was very enlightening. In fact, we were not aware of so many other innovations happening in the European Union. Now we have Professor Manish Madhav Tripathi, next in line in the long list of speakers. Sir is a professor at Integral University, Lucknow, and has been lecturer for 21 years at Veer Bahadur Singh Purvachal University at Jaunpur from November 2001 to June 2006. From 2009, sir has been working as assistant professor, then promoted to associate professor in the Department of Computer Science and Engineering with Integral University. We are very keen to listen to you, sir. Most welcome on the stage. Please give your big round of applause. भेज देंगे उनको। बहुत लेट हो गया है, आप लोग के चेहरे बता रहे हैं बहुत ज़्यादा थक गए हैं आप लोग जो है, सुबह से ही आप लोग जो है तो लेट में बोलते हैं। उन लोग के साथ भी एक दिक्कत रहती है किस तरीके से बोला जाए कि बोरियत भी आपको ना हो और काम भी हो जाए। बहरहाल मेरा टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, the topic is penetration testing. Actually, it is the fancy name of ethical hacking. You would have heard the name of ethical hacking before, and this is the fancy name of that ethical hacking. And
this is very important these days because we all have so many एक घर में मोबाइल रख दिया था, बाबू जब आएंगे तो आप इसको उठा लीजिएगा। करते करते आधे घंटे हो गए। अब हम लोग चिंता हुई कि आखिर ये फोन जो है तो फोन भी नहीं उठा रही है, दरवाजा भी नहीं खोल रही है। अब बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो गए। तब फिर जो मेरा सिक्योरिटी मैकेनिज्म था, अब मैं सोचा कैसे इसको ब्रेक करके घर में घुस जाऊं जो है जितने जल्दी जो है। अब मैंने जो है सारे बाउंड्री वालों के चक्कर लगाए, उसमें मुझे एक वीक पॉइंट लगा। मैंने कुछ ईंटें पत्थर लगाए और बाउंड्री कूद गया। बाउंड्री कूद करके जिस रूम में जो है चांस था कि सो रही होगी, और उसको जोर से अपना पीटा तो बाहर आई जो है वो सो रही थी दरअसल। तो उसके बाद सांस में सांस नहीं। ये कहानी मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि जितनी कंपनियां या जो भी सिस्टम हम लोग बनाते हैं उसको बहुत सिक्योर रखते हैं, और सिक्योरिटी जरूरी है। और दूसरा कहानी सुनाने का पर्पस ये था कि सिक्योरिटी क्या है, और ये जो एक अलग टाइप की समस्या जो है पेन टेस्टिंग क्या है। तो सिक्योरिटी जो आपने बाउंड्री खूब अच्छे से बनाई है, तो हर एक सिस्टम अपना एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाता है। अगर जो है वो सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो अपना फायरवॉल और दूसरे सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बनाए रखता है। लेकिन इस चीज की दिक्कत रहती है कि अगर कोई अनसेटिस्फाई एम्प्लॉय आपका है, आपने नौकरी से निकाला, अच्छा मैं अब देखता हूँ आपको, या कोई बाहर का इंट्रूडर है, वो चाह रहा है कि आपको किस तरीके से जो नुकसान पहुंचा दे आपके सिस्टम को। तो बहुत सारे टाइप के हैकर यहाँ पर हो सकते हैं जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं डिस्पाइट योर सिक्योरिटी, क्योंकि वो जानते हैं कि सिक्योरिटी कैसे ब्रीच किया जाए। तो यहाँ पर जो है एथिकल हैकिंग का मामला आता है कि इसके पहले वो हैकर हैं, आप खुद अपने सिस्टम को हैक करने की कोशिश करिए। इसको बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर, और जो बाहरी हैकर रहते हैं उनको बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर। तो व्हाइट हैट जो आपके हैकर हैं, इनको जो भी बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको बाकायदे रिक्रूट करती हैं बहुत अच्छे सैलरी पर। जान करके आपको ताजुब होगा, एवरेज सैलरी जो है व्हाइट हैट जो आपके हैकर हैं इनकी 10 लाख पर एनम है एवरेज सैलरी इंडिया में। और बाहर अमेरिका की बात करें तो $2 लाख के आसपास है। तो ये जो है एक्चुअल में इसकी जरूरत आपको महसूस हुई, क्यों जो है पेन टेस्टिंग की जरूरत है। अब हम ये चीज यहाँ पर देखते हैं कितने टाइप की पेन टेस्टिंग हो सकती है। तो इसमें 3 टाइप की पेन टेस्टिंग आपकी हैं।
ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इन द केस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग द टेस्टर हैज नो प्रायर नॉलेज ऑफ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो आदमी है जिसको आपके सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो हैक करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो हम जो अपने व्हाइट हैट हैकर हैं उनमें एक टीम को बुला करके उनसे कहेंगे आप इसको हैक करने की कोशिश करिए, लेकिन कोई उनको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे अपने सिस्टम के बारे में। अब वो जो है आपके सिस्टम को हैक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो उसमें जो भी जो वल्नरेबिलिटी वो फाइंड आउट करेंगे उनको आप बाद में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये वो वाला एम्प्लॉई है जो आप यहाँ एक लंबे टाइम तक काम किया है और आपके बारे में सब जानता है, बहुत अच्छे पोस्ट पर भी रहा है, सारे जो है कीवर्ड आपके जानता है। तो इसमें हम व्हाइट हैट हैकर के उस टीम को लेंगे और उसको अपने सिस्टम के बारे में सारी जानकारी देंगे और बोलेंगे अब तुम हैक करो। जाहिर सी बात है ज्यादा आसानी से हैक करेगा वो, और आपके सिस्टम की जो भी वल्नरेबिलिटी है उसको फाइंड आउट करके आपको बताएगा कि ये जो है आपके सिस्टम में कमियां हैं, आप इनको इम्प्रूव करिए। और तीसरा उस टाइप का हैकर है ग्रे बॉक्स, कि उसको जो है सतही नॉलेज तो है, वो आपके यहाँ का एक सिंपल एम्प्लॉय था, उसको एम्प्लॉय लेवल की जानकारी तो है लेकिन एडमिन लेवल की जानकारी उसको नहीं है, यानी कि पार्शियल नॉलेज आपके सिस्टम के बारे में है। तो ये जो है तीसरी वाली कैटेगरी हो गई। तो ये जो है टाइप ऑफ जो है आपकी पेन टेस्टिंग होगी। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज को बताऊंगा कि क्या इसके फेजेस हैं। तो जब बाउंड्री आपको कूदना हुआ तो उसमें सबसे पहले आपने देखा कि क्या जो है प्लानिंग आप करेंगे। आपके मन में आएगा बगल वाले से सीढ़ी मांग लें, कूद लें, ये भी आपके मन में आएगा अभी पॉइंट जरा सा देख लें, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। ये भी मन में आएगा जो है एक पाइप के सहारे, जैसे कि मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, आप चढ़ जाएं और वहां से उतर जाएं, तब फिर ध्यान में आएगा नहीं जो है ऊपर का भी दरवाजा बंद होगा, कैसे नीचे आएंगे। तो ये जो है प्लानिंग का पार्ट हो गया। स्कैनिंग में ये वाली बात आ गई कि छत पर तो पहुंच गए, नीचे कैसे आएंगे, यानी कि आपको टारगेट यानी बच्चे तक आपको पहुंचना है। तीसरा है कि वो मेथड आपको मिल गया जिससे कि एक्सेस गेन आपको मिल जाएगा, यानी कि वीक पॉइंट आपको पता चल गया, आपने सिस्टम को हैक कर लिया। जब वीक पॉइंट आपको मिल गया, जैसे कि मेरे केस में हुआ कि जब मैं जो है अंदर घुस गया तब फिर एक हफ्ते बाद ये चीज दिमाग में आई कि अगर मैं घुस गया तो हो सकता है चोर भी रात को घुसे। तो मैंने जो है एक हफ्ते के अंदर वहां पर लोहे की ग्रिल लगवा दी ताकि मैं तो घुसा, कोई और ना घुस पाए। तो ये जो है मेंटेनेंस एक्सेस हो गया। और इस तरीके से जो है कोई भी सिस्टम जो है अपने आप को बार बार एनालाइज करेगा, अपने सिस्टम को जो है इस तरीके से देखेगा और उसको मेंटेन करेगा। तो ये एक बेसिक जो है नॉलेज हो गया जो है इसके बारे में। ये कुछ टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं, जो कि बीइंग एससीएस डिपार्टमेंट प्रोफेसर ये सारे टूल हम लोग जो है यूज करते हैं कि इसको सिस्टम को किस तरीके से हैक कर लें या फिर जो है कैसे सिस्टम की पेन टेस्टिंग कर लें। इसमें से एनमैप और बेटा एक्सप्लॉइट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वायरसास सिस्टम जो है नेटवर्किंग के लिए है, जैसे जो है नेटवर्क का वाईफाई का पासवर्ड जो है आपको हैक करना है, तो ये जो है उसके लिए है। क्योंकि आज टाइम लिमिटेड है इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको यूज करना होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब विंडो वगैरह का यूज नहीं होता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। वन इज काली लिनक्स एंड अदर इज पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर दिस पर्पज। तो अब मैं अपने टॉपिक के सेकंड पहलू पर जल्दी से आता हूँ, जिसको डिस्कस करते हुए। जैसे मोबाइल फोन या गैजेट हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं, जैसे कि भाई साहब पीछे यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये जान के सरप्राइज होंगे, नो एंड्रॉयड फोन इज सिक्योर।
आपने महसूस भी किया होगा, आप घर में बात कर रहे हैं कि अरे वो जो है रेस्टोरेंट ये वाला अच्छा है, या फिर जो है फ्लिपकार्ट पर जो है बर्थडे है तो ये वाला गिफ्ट, और 1 घंटे बाद आप देखेंगे फ्लिपकार्ट अमेजन पर सेम जो है उसी टाइप का सजेशन आपके लिए आने लगता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एंड्रॉइड फोन आपकी बातों को सुन रहा है। और मैं इस चीज को दिखा सकता हूँ, समय कम है, लेकिन मैं इस चीज को दिखा सकता हूँ, आप लोग ट्राई कराएं। जो है बड़ा ही सिंपल सा एक डी कंपाइलेशन ऐप है, AAPT। AAPT को इंस्टॉल नहीं आपको करना है, सीधे नेट से डाउनलोड करना है, और नेट से डाउनलोड करके आपको डॉस में जाके उसके लोकेशन पर जाना है, और एक कमांड है डीकंपाइलेशन। और जो ऐप आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है उस मैप को जो है डबल कोट में आप लिखेंगे तो उसमें पूरा लिस्ट एक बन के आ जाएगी, और आप देख करके अचंभे रह जाएंगे कि वो ऐप जिसको बड़ा सिक्योर समझ रहे थे, वो ऐप जो है उसमें इस चीज की परमिशन दी हुई है कि वो आपकी आवाज सुन लेगा, वो आपके सिस्टम से फोन कर लेगा, वो आपके वीडियो के थ्रू जो है रिकॉर्डिंग कर लेगा बिना आपके जानकारी के। ये सारी चीजें उसमें जो है ऑन है, ये सारी चीजें उसमें ऑन है। तो हमें फालतू के ऐप इंस्टॉल करने से बचना है। हालांकि इधर जो है रिसेंट ईयर में गूगल प्ले स्टोर ने इसमें काफी सख्ती बरती है। तो गूगल प्ले स्टोर से अगर कोई ऐप आप लोड करते हैं तो वो कुछ हद तक, काफी हद तक सिक्योर है वो। लेकिन कभी कभी बच्चे जो है कोई पर्टिकुलर गेम को गूगल प्ले स्टोर ने अगर वहां से हटा दिया है तो तमाम जो है ये APK प्योर और इस टाइप की साइट हैं, वहां पर वो ऐप आपका मिल जाता है। तो वो ऐप बच्चे जो है इंस्टॉल करके गेम खेलना शुरू करते हैं। नॉर्मली 99% केस में अगर कोई ऐप इन सब साइटों से इंस्टॉल किया गया हो जो कि गूगल प्ले स्टोर के थ्रू नहीं है, तो 99% चांस है कि उसके अंदर जो है इस टाइप के फीचर हैं जो कि आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। इवन आपके बैंक अकाउंट का भी एक्सेस वहां से ले लेंगे वो। इसके अलावा अक्सर आप लोग देखते होंगे जैसे जो है दिवाली आ गई, न्यू ईयर आ गया, तो आपके पास मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। उसमें से कई मित्र जो कि ज़्यादा उत्साहित रहते हैं वो लोग जो है साइट का लिंक आपको भेजते हैं कि इसको 100 लोग को डालो, तो उस लिंक को क्लिक करते हैं, और आपको पता नहीं है कि अगर इस लिंक पर आपने क्लिक किया तो उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को मिल गई। अगर वो हैकर है, आपकी लोकेशन पता चल गई, मोबाइल का नेटवर्क पता चल गया, मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम उसने लगाई, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू पूरा डेटा आपका फैच कर लेगा वो। मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सिंपल जो है ग्रेविफाई ऐप है उसके थ्रू ये चीज आपको दिखा सकता हूँ। ग्रेविफाई लिंक। सर 2 मिनट का टाइम है क्या?
अब यहाँ पर आप ये देखें कि मुझे जो है किसी को लिंक भेजना है, तो मैं जो है गूगल पे गया, कोई बढ़िया सा जो है फोटो या फिर गुलदस्ता मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया फ्लावर की इमेज यहाँ से लिया और मैंने दाम देखिए कोई भी एक चीज मैंने सेलेक्ट किया। इमेज लोकेशन नई टाइप में बोल दिखा जो इमेज की एड्रेस है उसको मैंने यहाँ पर जो है कॉपी किया, क्रिएट यूआरएल। अब यहाँ पर ये एड्रेस है, ये लिंक है, आप चाहें तो डायरेक्टली इस लिंक को भेज दें। जो है ये कॉपी, अब कॉपी करके जिस फ्रेंड को भी भेजना है तो वो आपके जो है फोटोग्राफ को देखेगा, व्हाट्सएप पर भेजिए वही। अगर जो है किसी को जानकारी हो गई अच्छा ये तो ग्रेविफाई से आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये भी दिया है कि आप इसके लिंक के नाम को बदल दें। ये लिंक के नाम जो है तमाम है, आप लिंक के नाम को जो है बदल दें यहाँ पर, तो ये आपका ग्रेविफाई से जो है नाम भी इसका बदल जाएगा, कोई आपका फैंसी सा नाम यहाँ पर बन करके आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप अगर यहाँ पर कॉपी करके इसको भेज दें जो है फ्रेंड्स को, तो यहाँ पर रिजल्ट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर पूरी आईपी एड्रेस आपका, आपके जो है यहाँ पर पूरी जो है फुल इंफॉर्मेशन, क्या आपकी लोकेशन है, वो सारी चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं सिंपल सा लिंक जो है क्लिक करना कितना ज्यादा डेंजरस है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी चीज ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल हम लोग ये चाहते हैं कि अगर जो है सीसीटीवी लगा दिया तो बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया, घर के अंदर, घर के बाहर, किचन में, आंगन में सीसीटीवी लगी पड़ी है। कोई भी चीज अगर वो नेट से कनेक्टेड है तो वो आपका सिक्योर नहीं है, कोई भी उसको देख सकता है। इवन जो है गूगल पर अगर आप जाएं तो गूगल भी जो है बहुत सारी इमेजेस आप देख करके सरप्राइज होंगे कि सीधे जो है सीजीआई अगर जो है कीवर्ड आप डालें हेलो कीवर्ड में जरा सा बोल रहा हूँ, आपको आ जाएगा, ठीक, हम ही भेज देंगे, हम ही भेज देंगे, हम ही भेज देंगे सुबह वाले को जो आपने बात किया आप ही को भेज देंगे। क्या नहीं तो आप कल भेज दीजिएगा, एक पेमेंट का आधी कल मिल जाएगी, जब आप आएंगे तभी मिल जाएगी। ये तो मैं अपनी तरफ से भेज ही दे रहा हूँ आपको, आप कल लड़के दीजिएगा, कल आपके पास डेट एक साथ ही हाँ करा देंगे, थोड़ी बहुत अपने पास से कर देंगे कि अभी तो कॉलेज सब बिजी नहीं है, हाँ 5 बजे छोड़ देंगे।
क्लिक करें अगर दिख रहा तो आप ये देख रहे हैं किसी सीसीटीवी का लाइव जो है फुटेज यहाँ पर आ रहा है, लाइव फुटेज। तो सिंपली आपने ये देखा कि सिर्फ जो है गूगल का यूज करके किसी कैमरे का एक्सेस यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपने लगा दी या जो है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी अभी मैंने बात किया था वो आपने लगा दिया, तो आपके सीसीटीवी भी कोई देख रहा होगा। इसलिए जहां जरूरत है सिर्फ वहीं पर जो है सीसीटीवी लगाएं। जैसे हम लोग आजकल जो है बैंड पहन रहे हैं, तो बैंड भी सारी इंफॉर्मेशन नेट पर ही डाल रही है, और जो इंफॉर्मेशन नेट पर जा रही है वो आपकी सिक्योर नहीं है। इसलिए अननेसेसरी मेरा ये कहना है, जल्दी भी कहना है, अननेसेसरी जो है सिक्योरिटी के मायाजाल में न फंसा जाए। जरूरत है वहीं पर सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जाए, बैंड का अननेसेसरी इस्तेमाल मत किया जाए। जब जरूरत हो केवल तभी बैंड पहना जाए। ये एक लिंक मैंने दिया है mmnt.net। इस साइट पर डायरेक्टली आप जा करके चेक कर सकते हैं कि ये साइटें हैं जो कि वल्नरेबल साइटें हैं। तो आपका वेबसाइट कहीं इनके लिस्टिंग में तो नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट इनके लिस्टिंग में है, इसका मतलब आपकी साइट ही वल्नरेबल साइट पे आ रही है। ये जो है यूएसए के इनकी साइट को मेंटेन किया जाता है। एक और जो है ऐप है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, sodan.io। sodan.io को मैं जो है जनरली करता हूँ। इसमें आप जाएंगे, कुछ कीवर्ड डालेंगे, तो आप ये देख रहे हैं, ये जो आपको जो है ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में शिप है। शिप की लाइव लोकेशन है ये। जो भी वर्ल्ड वाइड जो है जितने भी कार्गो शिप या जो है डिफरेंट टाइप के शिप्स आपके जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑयल टैंकर हैं, ये उनकी लाइव लोकेशन है। तो अगर ये शिप की लाइव लोकेशन यहाँ पर जो है इस तरीके से डोमेन में दिख सकती है, तो इसका मतलब कितना सिस्टम आपका इंटरनेट का सिक्योर है वो आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ग्रेविफाई मैंने आपको इस केस में दिखा दिया है। सिक्योरिटी के बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछें इस टॉपिक के बारे में। ठीक है। Thank you, sir. That is a burning topic today. That is security and safety from any hacks or any phishing attempts. There are so many viruses and all kinds of malwares. Next in line, sir, we have Dr. Krishna Raj from HPTU Kanpur. Dr. Krishna Raj, sir, is kindly acknowledged. Dr. Krishna Raj, sir. Thank you. Sir is a BE from electronics from MNREC Allahabad, and sir has also studied in DDU Gorakhpur. That is the place we are coming from. Sir has also done his ME, his Master in Engineering from and a PhD from Madan Mohan Malvi Engineering College, Gorakhpur. Sir has got 62 papers published, 3 books published, and invited lectures 43. Sir has got supervised MTechs 19 and supervised PhDs 3. Sir is a voracious reader and a very prolific writer, it seems, and presently the asset of Harvard Butler Technical University. Please welcome Dr. Krishna Raj, sir, with a huge round of applause. Please, sir.
Thanks, Professor Colonel Sandeep Singh, sir. I am thankful to Ambalika Institute Management and Technology, and really I am thankful to all respected audience. I have been shifted from first speaker to I think the last speaker. कोई बात नहीं, न कल न आज, न खुश न नाराज, पढ़ना पढ़ाना अपना काज। मैं हूँ प्रोफेसर कृष्णराज। Today here just we to discuss about some opportunities, issues and challenges. I am from very specific field, that is the VLSI implementation of DSP system. As we know, we are also a type of the VLSI chip because whole universe is integrated, yes, in our brain, in the form of the chip. Whatever is the technology or engineering, first of all we have to develop it. We have to develop the algorithm. Accordingly, we have to develop the mathematical model. We have to simulate it, test it. We have to develop the prototype. And finally, it has to be integrated in the form of the chip. Only then we can say, yes, now it can be utilized for the society. What is the role of education? The role of education is just to perceive from the society, that is to learn from the society and to earn the knowledge so that we can serve the society. And having the same concept, the education technology or the teaching learning has been developed so that we can learn and we can serve the society. And on the same pattern, now there is a new concept, that is the machine learning. We are just in the new phase, just going to teach the machine so that machine can learn and machine can serve us. Why? Because human beings are intelligent, but not the smart system. Machine is a smart system. And what is the drawback of the intelligent system? Whatever is the advantage associated with us, that we are the intelligent, same is the drawback. That during one process, we can process all other thoughts and concepts. And in order to get the accurate results, we are moving towards the machine. Okay. Here, in the first PPT, just I would like to introduce the concept of the system and its implementation. हम सभी लोग इंजीनियरिंग से हैं या अलग अलग फील्ड से हैं? Whether we are from the engineering technology, we all are from the engineering technology and science. Okay. So here, the concept of any design and implementation is, we will start from the definition, then we have to describe the derivation, and accordingly we have to here develop the system, and finally it has to be implemented. Just try to see. टाइम बहुत कम है, उसे हम समझाने की कोशिश करेंगे, और महानता हमारी नहीं, महानता आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करिएगा. Now see here. First of all, we have to describe the system. What is the system? Naturally, system operates on the signals or the inputs in order to get the desired output. And this type of the system may be either without feedback or with the feedback. बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल स्टेज तक एक ही पीपीटी कोशिश करेंगे डिस्क्राइब करने की. एंड व्हाटएवर इज द सिस्टम, नाउ वी हैव टू डेवलप the effective system by the introduction of the some effective methodologies. Effectiveness बढ़ जाता है due to the involvement of the software, hardware and human beings. Now here, if any requirement is given, requirement is an ideal form,
And if we apply here the practical approaches, then we will derive here the parameters that is named as the specification. And after getting the specification, we have to decide which type of the system has to be developed, dynamic or the static. कहते हैं बड़ा dynamic personality. The capacity to contribute something. That is the dynamic system or the personality. So naturally, dynamic system is good, and then we have to decide whether it is the analog or the digital. We know the mathematics is the backbone of engineering and science. And in order to develop the concept of the digital or the analog system, we utilize a system that is either it will be represented differential equation or the difference equation. If the analog system, continuous system, naturally the differential, and if it is digital, then difference equation. And here we have shown one-dimensional equation, and similarly we can represent here the two-dimensional equations also here. And whatever is the equation we have derived here, after the derivation we have to decide which type of the system to develop. LTI or the adaptive, linear time invariant or the adaptive, जो suggestion के हिसाब से मैं आपको बता दें, जो suggestion के हिसाब से मैं आपको बता दें, adaptive system, that is superior system and suited for the static situation also. And then we have to decide which type of the response, low pass, high pass, band pass, having the feedback or without feedback, moving average or the auto-regressive. And at the same time, we utilize the different types of the analysis, like the Fourier series, Fourier transform, Laplace transform, Z transform. All these transforms are utilized only for the stationary signals. Non-stationary signals are analyzed using the wavelet transform, having that discrete or the continuous. And after this one, we have to design the system. And what will be the performance of any system? That will be decided on the basis of the 4 parameters. And these parameters are the, what is the speed, what is the area required, what is the power consumption, and if we are interested in order to design the digital system, then naturally finite word length is required. So on the basis of these parameters, we have to decide the algorithm, and whatever is the algorithm, now it has to be mapped to the processor. And now for the purpose of the processing, either we can use the graphical representation or some languages. Languages are categorized into 3 categories. One is the perspective, like the C, and the second one is the descriptive, the very large VHDL, and the third one is the applicative, like the MATLAB. Similarly, we can use here the graphical representation, the signal flow graph, block diagram, and dependence graph, or data flow graph. Using these type of the representation, we can map our algorithm to the processor, and after this one, whatever is the algorithm that will be downloaded on a given target or the processor for the purpose of the simulation, emulation, or for the purpose of the implementation. So this is the concept of the design and implementation, which we generally study starting from first year to final year. ये पूरा एक पीपीटी में हम लोगों ने डिस्कस किया. Now, welcome sir. Director sir, welcome. Now, after this discussion, if we come to the here the concepts, then we can say, we can summarize that we have developed here the theoretical concepts, then we have developed the mathematical, and whatever is the concept, accordingly we have decided which type of the architecture has to be utilized. Then we have to decide which realization, and then after this one, when we are going to transfer our concept to the processor, then naturally the quantization is required. So the first coefficient is quantized. After that, input, output, product, sum, all are quantized here. And how the quantization will take place? These are the different methods that are utilized in quantization. That is the mode, round mode, and overflow mode, and the data format.
And in data format, we use the two types of the data. One is the fixed point, the second one is the floating point, and we generally use during the time of the programming, whether we are from the electronics, electrical, computer, civil, whatever is our branch. But generally, we use the programs in order to simulate our work. And after this one, we have to write the code, and accordingly we have to realize the system here. Finally, we have to test and compare our program with the theoretical aspects. After these concepts, we are just coming here. Suppose we have developed any algorithm, then how these algorithms will be enhanced. Suppose we have developed any concept or any algorithm. As the first concept of this one is the innovation. Innovation means, as we have discussed, system requires four types of the comparative parameters. One is the power consumption. Second one is speed or the propagation delay. And the third one is the area required on the silicon wafer or the memory space. And the fourth one is the finite word length effect. So on the basis of these parameters, whatever is the concept, we will analyze that concept. And if we develop any new concept, either using some new algorithm or by the hybridization, then naturally some parameter will be enhanced at the cost of the another parameters. And this will be named as the new technology, new concept, new technique, that is named as the innovation. For example, here we have considered one algorithm, and that algorithm can be enhanced on the basis of this one, that whatever is the critical path, that can be reduced. Critical path means pulse speed, clock rate will be here the increased. When we reduce the clock rate, then the speed of processor or the algorithm will be enhanced. And next is the pipelining and parallel processing. Naturally, it will also enhance the performance of the system. Retiming, that is, here we can change the location and position of the storage devices, and hence we will get the new algorithm. Folding and unfolding, these are used in order to reduce the clock speed or the number of the registers or the memory size that are used to develop the new concept or the new algorithm. Here, these are some examples which have been used in order to introduce these concepts. I am the last speaker, and I have been given very less time at the last, but trying to here introduce the concept, whatever we have related to the VLSI and implementation. We are very well known with the concept of the binary number. Please try to listen to me. The binary number is the two labels, and these two labels are given the name of the bit. That is named as the binary digit, 0 and 1. Now the 0, 1, as the one concept is that we have developed the algorithm, and by applying the pipelining, parallel processing, timing, retiming, folding, unfolding, we can enhance the performance. One concept. The another concept is here the signal value or the coefficients itself can be enhanced by the introduction of the new coding scheme. Now suppose the 0, 1 is combined here, and 0, 1 combination of the 0, 1 will become the 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Now suppose we apply one concept, that the LSB minus MSB or the MSB minus LSB. So what will be the outcome? 0, 0, 0 minus 0, that is the 0, 0, 1, 0 minus 1, minus 1, 1 minus 0, 1, 1 minus 1, that is 0. So what are the outcomes? 0, minus 1, 0, 1. So there are the three outcomes. In place of the 0 and 1, now we are getting the minus 1, 0 and 1. Now in previous case, if we design any adder or multiplier, the
The nature of that one is additive, and due to that nature, carry is generated. But now if we introduce this concept, then what will happen? When the carry is generated, then at that same time, if we are adding here the -1, then the carry will be eliminated. So speed will be very high. So this is the concept having the high speed, but what is the drawback? That we are using here the 2 bit. So now in place of this concept, now we will hybridize this one. Traditional one and the RBSP, and that is known as the hybrid sign digit number system. This is the concept of the hybrid sign digit number system that describes that speed is very, very high when we use the redundant binary number system. And here see, I am just skipping. These are the concepts, whatever we have discussed here. बस खत्म हो गई लास्ट नहीं 202 ज़्यादा पिपीटे नहीं है, परेशान ना हो, उसको पूरी कंक्लूड कर रहे हैं. Now suppose we have to design any system using these concepts, then we can say here that speed of the system, ये results आपको दिखा रहा है जो हम लोगों ने डिजाइन किया है. Speed is very high and area is reduced by 10% here. And similarly, if we use here the hybrid sign digit number system, then again this paper has been published in this one, whatever is the work that has been published. The second one, if we use the hybrid sign digit number system, then again here we will find the better result, and this work has also been communicated for purpose of the publication. Now we are just coming to the teaching learning system here. Whatever we have discussed in the VLSI and DSP, how we will introduce this concept in the teaching learning system. It is also a type of the system teaching learning, and we can introduce here the technology. Then that is known as the educational technology, or technology in education, or the education of the technology. And here we have to introduce the effectiveness, and how the effectiveness takes place due to the experience. Here see, why we have to introduce the effectiveness, as in the case of the systems, we are interested in order to get the 4 parameters, that is the power, speed, area, finite word length effect. Similarly, the purpose of the education is to discover the diamond, within us. When we take class, when we are in the class, who is educated? Teacher or student? After a class, who is educated? Teacher or student? टीचर Both are educated. Teachers and students both are educated after the teaching learning classes here. So we have to discover the diamond within us, and as we know, the value of any diamond depends upon the carat, cut, color and clarity. Similarly, the carat is related to the passion, positive energy, cut is related to performance, perseverance, color, personality, pupil skills, and clarity is related to the perspective, principles, patriotism. Okay. Now, teacher is like a system, and it has the 4 subsystems. The first one is the planning, the second one is organizing, third one is the leading, that is the motivation, and the 4th component is the controlling. Teacher is not a person, teacher is a system. That includes the policy, rules, regulations, resources, students, teachers, society also, as well as the principles and philosophy given by our seniors and scientists, mathematicians, philosophers, etc. Now if we see how we learn, what is the learning? Learning is nothing but this, that is the modification of our behavior. And what happens? First of all, we have to perceive from the society, and whatever we perceive, it is
stored in our memory. And if we are in position so that whatever we have stored, we can retrieve it at the time of the requirement, then it is named as the idea. And if we are in position to perform on the basis of the idea, then it is named as the concept. And on the basis of the concept, we perform. And whatever is our performance, it has to be checked. It has to be compared. It has to be analyzed within our set goals. And if there is a need, that is, the deviation is outside of the permissible range, then naturally there is a need of the reinforcement. But for all these purposes, here the perception requires attention, attention requires the motivation, that may be the internal or external. Naturally the internal motivation is much powerful than that of the external motivation. And these motivations also needs the basic needs. As we know, in the class we go using the 4 steps so that we can transfer the knowledge from student side, teacher side to the student side here. Now, again we are coming to the another concepts, whatever the so many senior persons, learned professors, scientists have discussed here, and as we are always used to discuss, that the main purpose of teaching learning is to get some new concept, to discover the diamond within us. Here, that is known as the research. After the research, the next one is the invention. And whatever is the invention, that will be utilized to develop here the prototype, and at the risk level we can patent. Naturally, if you have developed a real patent, then only we can develop a company, and there is need of some money for the business plan. And after getting some support, we can enhance our research, and we can again get the research grant and some other supports, and hence we can get here the discovery grant, and finally we can develop our independent company. So this is the main goal of the teaching learning. That is not only the classroom teaching. So this is our concept which I have discussed here, starting from the realization implementation of the. Thank you. यही बुलवा दीजिए आज नहीं है, कल ऑनलाइन कल आलोक सर का है ना इसके बाद 200 चले गए क्या बैठे तो उनको स्टेयर से सब वहाँ तक ना तो यहीं से hereby conclude the proceedings of this day. बोलना पड़ेगा ना If there is anything else, ma'am, would you like to add? May I request all the delegates, keynote speakers, and faculty members. As the day has come to an end today, so I'll request for the chair sessions people to move to room number 202 for applied science, physics, maths and chemistry. So the people of applied sciences will move to 202, and the people who will be chairing the scenario will be there on time. So please make sure that after tea, high tea, you reach over there. Room number 202. Rest is for CS department. So you will be moving to, and mechanical department will move to 201. So the people from mechanical department, they will move to room number 201, 202 only. So everyone will be there in 202. So after high tea, you can come over to the room. Thank you so much. So please, you can go for high tea.
After that. So please, I request everyone to move for to room number 202. Respective faculty members, research scholars from applied science, please move. After the paper presentation, Mechanical and most welcome